विश्वास को आघात न देवा पाए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। से पोस्ट मास्टर एक आइडिया रे निष्पत्ति नेबाकू चाहिए कौन पाए आंसर द लेटर। से लेटर रे कौन अच्छी तार आंसर देवा पाए चाहिए। बट व्हेन ही ओपन it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। किंतु जेतेबेले से लेटर टी को ओपन कले सेठी कौन जहाँ लिखा हिला ताहा गुडविल व सदिच्छा इंक पेपर टू भी आहरी अधिक जिन दरकार थिला। कौन दरकार थिला you know this but he stuck to his resolution। जदिओ गुडविल इंक एंड पेपर टू भी आहरी किछि अधिक दरकार थिला से निश्चित भाव देवा he stuck to his resolution। से निज प्रतिज्ञा रे अटल रहिले। एठी स्टक मीन्स होची अटल एवं रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट resolution means a firm decision। दृढ़ निष्पत्ति को आमे कहू कौन रिजोल्यूशन। से निज जिद रे अटल रहिले निज प्रतिज्ञा रे अटल रहिले। he asked for money from his employees। से ताका पोस्ट ऑफिस रे एम्प्लॉयज मानन को कहिले से विषयटी एवं किछि मनी देवा पाए कहिले। he himself gave part of his salary। से निजर सैलरी रो किछि पार्ट देले and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। एवं तांकर फ्रेंड्स मध्य किछि मनी दिले कौन पाए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एले एही कार्य को एही बदान्यता को कौन कहा छी एही अन्य हित पाए जो कार्य करा जाए ताको कहा जाए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। रिमेंबर दिस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। हेले के who did contribute the money to San Lencho employees of that post office, the postmaster and several friends of his। It was impossible for him to gather the 100 peso, so he was able to send the farmer only a little more than half। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as his signature, God। जेतिकी मनी से लिखा हिथिला सेतिकी मनी से गैदर करि पालेनी। गैदर माने कोन जेमति कि हमें फर्स्ट पोएम रे पढिथिलु पीपल गैदर एवरी डे। गैदर मींस कलेक्ट। It was impossible for him, for the postmaster, से समय 100 पेसो बेसी मनी थिला। जो समय लिखा हिची से समय 100 पेसो बेसी मनी थिला। जोडे तमे भाबो जे सेही 100 पेसो रे से तार कॉर्नफील्ड को जो बुणीबो पुणी से माने खाइबे से 100 पेसो रे जाउथिला। माने केते टंका भाबो। तेणु कि पोस्ट मास्टर जनक 100 पेसो कलेक्शन करि पारलेनी किंतु 100 पेसो रो टिके अधिक से देले। He was able to send the farmer only little more than half। अधारो अधिक टंका तो नुहे पेसोज से जुगाड़ कर पारे। He put the money in an envelope addressed to Lencho। गोटे एनवेलप भितर से ही मनी को से रखिले एवं ऊपर लिखले एड्रेस रे जेंति एड्रेस देनी लेटर जीवो एड्रेस लिखा गला टू Lencho with a letter containing only a single word as a signature, God।
କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ହେଇନଥିଲା, କେବଳ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଓନ୍ଲି ସିଗ୍ନେଚର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିଗ୍ନେଚରଟା ଗଡ୍। ଏଠି କଣ୍ଟେନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ରହିବା। The following Sunday, Lencho came as a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was for him. अर्थात लेंचो आगुरी भी सही पोस्ट ऑफिस को आसे, किंतु जो समय आगुरी आसला सही समय ठारू द फॉलोइंग संडे अर्थात जो गोटे संडे रे से लेटर ड्रॉप करिछि, लेटर सेंड करिछि, तार नेक्स्ट संडे जब एठी फॉलोइंग संडे रे से कोन टिके आगुरी आसी, टिके सवळ आसी, कोन पय जे से पचारिबो ता नारी कोनसी लेटर आसी कि नाही। एठी संडे दे आइछि, से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज रे होय तो सही समय रे संडे हॉलिडे नथिला, तेणु कि एठी कोन पोस्ट ऑफिस को ओपन रहितबा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment. पचारला जिते बेले लेंचो whether any letter has come for him or not, कौन से लेटर ता पाइस्टिन पचारला परे the postman said yes, postman कहिले हाँ ये letter is for you, this take this, हेले ए लेटर टी तम पाए you नहीं जाओ बोली कि से कहिले। जिते बेले पोस्टमैन से लेटर टी को लेंचो को दौले से समय पोस्ट मास्टर जनक ताको आनंद नौले, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड। एही पोस्ट मास्टर जनक भल कार्य करथिले कि नाही, निश्चित भाव में से किते कष्ट रे ता पाई अर्थात लेंचो पाई पेसोस मनी कलेक्ट करथिले। तेणु कि गुड डीड को कौन करते ऑफिस रो से देखुंती, कारण एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट एवं ताको देखि कि से कंटेंटमेंट पाउचंती, तृप्त पाउचंती, संतुष्ट पाउचंती, से सैटिस्फैक्शन अनुभव करले। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेटर टी देला परे लेंचो पोस्ट ऑफिस रे ही खोलिले, किंतु खोलला परे से कोन देखले सेठी मनी थिबा देखिले। जदियो मनी थिबा देखिले किंतु नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तिले हिले से चकित हेलेनी, से आश्चर्य हेलेनी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, तार इते दृढ़ विश्वास थिला जे ईश्वर को ऊपरे, बट he became angry when he counted the money. किंतु जिते बड़े से मनी को काउंट कले से कौन केमती ले एंग्री हे गले, रागी गले। God would not have made a mistake. से निजे भाबुची कहूची जे God केबे भी मिस्टेक करंतिनी। Not could he have denied Lencho what he had requested. एवं लेंचो जो रिक्वेस्ट करिछि तार रिक्वेस्ट को भी गॉड मना करि परिबेनी बोली कि से निजे निजे कहि होछि। अर्थात तार इते कॉन्फिडेंस थिला
से गॉड को निजर भावी नहीं दिला. Next, see the paragraph. Immediately, Lenzo went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Signature Lenzo. After counting the money, he became angry. Then immediately Lenzo went to the window to ask for paper and ink. Lenzo रागी कि इमिडिएटली विंडो पाक को जाई से पोस्ट ऑफिस रो जोटी कि तो पेपर मांगले देबे कि स्टाम्प जो किन लेबे जो से विंडो पटे दउथिले से पेपर एंड इंक मांगी कोन करबो देखिबा. On the public writing table, remember this, on the public writing table, public writing table, he started to write, say, letter टे लिखुची with much wrinkling of his brow. रागिले जेमिति कि हमर जो wrinkles जाक अछि forehead रो ताहा कोन हे जाय जेमिति गुरे कुंचित हे जाय सेमिति से रागी की लिखुची caused by the effort he had to made to express his ideas. तार ideas को express करिया पाए से पूरा रागरे with anger he is writing the letter. When he finished लेखा सरला परे on the public writing table, remember this, on the public writing table, public writing table, he started to write, say, letter टे लिखुची with much wrinkling of his brow. रागिले जेमिति कि हमर जो wrinkles जाक अछि forehead रो ताहा कोन हे जाय जेमिति गुरे कुंचित हे जाय सेमिति से रागी की लिखुची caused by the effort he had to made to express his ideas. तार ideas को express करिया पाए से पूरा रागरे with anger he is writing the letter. When he finished लेखा सरला परे he went to the window to buy a stamp. से विंडो पाख को आउथरे जाइछि कोन पाए स्टाम्प किनिबा पाए. he lit ताको से लेटर रे ए एनवेलप रे लिख करिके affix करिछि to the envelope with a blow of his fist. एले जते बळे से कोन करूछि से स्टाम्प लगिला से सब एमती गुडे थमाछ. The moment the letter fell into the mailbox, से सरे से ही लेटर को नहीं कि मेल बॉक्स रे पकेछि. the postmaster went to open it. सेकंड लेटर को मध्य पोस्टमास्टर ओपन कले एवं he was reading the second letter to of the money that I asked for. God, ମୁଁ କଣ ଏତିକି ମନି ପାଇଁ କହିଥିଲି କି only 70 pesos reached me. Remember this, only 70 pesos. How much money did Lenzo get first time?
ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲା send me the rest since I need it very much ବାକି ତକ କେତେ how much ବାକି ତକ କେତେ ଲେବଲେ ତାକୁ କେତେ ଦରକାର ଥିଲା 100 ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ କେତେ ମିଳିଲା 70 ପଇସା କେତେ ରହିଲା 30 ପଇସା ଏଠି rest send me the rest means 30 pesos since I need it very much କାରଣ ମତେ ଜରୁରୀ ଅଛି but don't send here he writes a negative sentence but don't send it to me through the mail ଏହି କିନ୍ତୁ ମତେ मेल ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଅନି ଏଠି mail means through the post because the post office employees are a bunch of crooks ତାର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତେଣୁ କି ସେ କହୁଛି ଯେ ମତେ मेल ରେ ପଠାଅନି କାରଣ ଏ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଏ bunch of crooks remember this ଯେ ମତେ मेल ରେ ପଠାଅନି କାରଣ ଏ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଏ bunch of crooks remember this a bunch of crooks ଏଠି what does this phrase refers to a phrase ଟି କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି to the post office employees remember this to the post office employees means what post office employees ଉପରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି ତେଣୁ କି ସେ ମନା କରିଛି ଗଡ କୁ ଗଡ don't send through the mail through the post office ଅର୍ଥାତ ମଣିଷକୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ପାଖରେ ତାକୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି but whom we can't see he had faith strong faith ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ତାର ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇଛି କଣ लिखि ଦେଇଛି तो स्टूडेंट्स ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା are the employees of the post office really crooks ସେହି post office ର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରକୃତରେ crooks